में हम बात करेंगे अब्यूज के बारे में। हम अब्यूज को समझने की कोशिश करेंगे और हमारी ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अब्यूज को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, एंड इन केस आप किसी अब्यूसिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं, सो हाउ डू यू गेट हेल्प। तो हमारे साथ मैम राबिया उस्मान है, and she will be answering all of our questions. Welcome, ma'am. Thank you so much for giving us your time. So, let's just jump right into it. हम start करेंगे abuse को समझने से. Emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, abuse की बहुत सारी इकसाम है. And physical abuse, verbal abuse, sexual abuse को फिर भी ज़्यादातर लोग जानते हैं और समझते हैं. However, emotional abuse को समझना, understand करना victim के लिए भी अक्सर मुश्किल होता है, and perpetrator जो commit कर रहे होते हैं उनको भी अक्सर नहीं पता होता कि उनके actions abuse के हद तक जा रहे हैं. तो क्या आप थोड़ा सा हमें explain कर सकती हैं कि emotional abuse क्या होता है, gaslighting, manipulating, इसमें जो elements आते हैं, emotional abuse को थोड़ा सा explain कर दें हमारी audience के लिए. Well, I think we need to understand the magnitude of abuse and violence prevalent in our society. हमारे पास जो data reported है, that is way less than the actual happenings we have in our society. इतना ज़्यादा इसका, especially after the pandemic and during the pandemic, इसका ratio इतना ज़्यादा था कि WHO termed it as a shadow pandemic. और even पाकिस्तान में जब हमारे पास बिल्कुल एक strict wave थी इसकी COVID की, all the service providers, they were not functioning in their full capacity. So women were so vulnerable, they were at a heightened risk and there was nowhere to go to seek relief. And during that period, most of the women, most of the populations, they suffered through emotional abuse, physical abuse, and most importantly, economic abuse. So emotional abuse and gaslighting, aajkal ki, although they are new terms, but these things have been happening from centuries and women have been suffering. Basically, it's the imbalance of the society that leads to this position. And although our religion, it is very open in terms, if you are not, if the husband and wife, they are not in a good relationship and they want to be separate. So there is no hard and fast rule to force anyone to continue the relationship and all. But it's the cultural influence of our neighborhoods or neighboring countries that forces the women to spend their lives, all of their lives, in abusive relationships. So emotional abuse में basically self-esteem low करना है, hurt करना, whatever choices an individual is making, उनको doubt करना. The emotional abuse and the lowering of the self-esteem is so heightened that women, they can't perform up to their maximum potential. Gaslighting भी यही है कि blaming the other person for the actions they're doing fine, but उनको उस तरह blame करना कि manipulation की हद तक उनके actions को अपनी मर्जी उनके ऊपर डालना, if they have done something उनको उसका blame करना. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. Because women और vulnerable communities ही emotional abuse का अक्सर victims रहते हैं, अक्सर सोचा जाता है कि ये एक societal problem है और society के level पे ही solve होगी, और because ये कितना subjective experience है, law bodies को इसके अंदर consider नहीं किया जाता. तो क्या पाकिस्तान का law किसी तरीके से victims को emotional abuse के खिलाफ protect करता है? किसी अगर करता है तो आपको अगर कोर्ट पे जाना पड़े इमोशनल अब्यूज प्लीड करने के लिए, तो आपको किस किस्म का एविडेंस लेके जाना पड़ेगा? बिकॉज आप इमोशंस की तस्वीरें तो ले नहीं सकते. We were talking about how the law protects victims of emotional abuse. Actually, the Women Protection Act 2016, which was drafted in 2016, it is only applicable where the Violence Against Women Center, which is a holistic service center, is available. And that is only available in one city of Pakistan, and that is Multan. So the law is there, but to enact it, we need a system to provide relief through that act. It's unfortunately still under process for Lahore and other big cities. So that act, that law, it protects women against domestic violence, and it covers the emotional abuse part. And there is a mechanism to assess the damage done by the emotional abuse, the psychological harm. There are a panel of psychologists involved, sessions involved. So that is, I think, the only act that holistically covers the emotional abuse part. But it is under process for applicable in all the other cities apart from Multan. Okay, but ma'am, जब victims मुल्तान में भी ये केस लेके जाते हैं, तो emotional abuse को वो prove कैसे करेंगे? किस किस्म का evidence वो provide कर सकते हैं कि हमारे साथ emotional abuse हुआ है?
They can obviously state, they can obviously inform that this was the situation and this is what we felt. So there are psychologists available, clinical psychologists, and they have a mechanism to assess and to determine the extent of damage. So it's that part, that is the job of the experts. They have a mechanism for it. Okay, thank you. Ma'am, so हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. एक सिचुएशन जो अक्सर डिस्कस नहीं की जाती वो है यंग पीपल डेटिंग इन पाकिस्तान. अज्यूम किया जाता है पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री तो यहाँ पे डेटिंग शेटिंग इस तरह के काम नहीं होते. The thing is, those things happen. It's true, it happens, and because वो secretly होता है, a lot of the people, especially the women, are very vulnerable in those situations because it's easy to blackmail them. It's easy to abuse them because वो अपनी family से छुप के काम कर रही होती हैं. Same with men. So my question is, to these women who are, dating, to these women who are in relationships which are hidden and secret from their families, what kind of actions should they take to protect themselves? For example, my family always told me, बचपन से लड़की हो या लड़का हो किसी को कोई तस्वीर नहीं भेजनी जो कि आप पब्लिक में शो नहीं कर सकते. Don't trust anyone. That has been a very good advice. So what kind of advice would you give to these young women to protect themselves and not be vulnerable against blackmail? एक तो ये बात है कि we should always be mindful of our boundaries. वो having said that, उसके बाद we have to be careful. आजकल का जो ज़माना है, it's also about cyber related crime. चीज़ें वायरल हो जाती हैं, defamation होती है, people get revengeful, people get nasty. So to avoid all that, even if in a very trustworthy relationship, if you say, so I've seen it happening even after marriage. Spouses do it also. It's not that if you are not nikah-fied and it's not safe. It even happens later on also. So one thing they must keep in mind that it's always about their consent. Even if in a relationship, even if they're outside, even if they're on a date, there are certain boundaries which the other person needs to understand and which they have to clearly convey through their gestures or open communication that this is the limit, I don't want anyone to cross. So most of the things, most of these incidents, they happen through misunderstandings and also because the other person is taking a leverage of the vulnerability. So even if you know that you're in a vulnerable position, you should be mindful of the rights you have. You should be mindful of the consent, to which extent the consent you are giving, and you should be mindful how to seek help in emergencies. Even if you are on a date or in a vulnerable situation, you should realize that if it is a life-threatening situation, you have to save your life. So you can definitely call the police. If it is about cybercrime and someone is blackmailing, there are forums available for redressal. There is a cybercrime wing of FIA. These are the human rights crisis centers who take such complaints. So the laws exist, but the best thing, the best strategy is to keep yourself safe, to keep yourself protected, and to be mindful of all the protective measures which can let her enjoy the situation, but keep her safe also. So it's better that while people are in a relationship or they're dating, I think girls should be mindful of their rights and responsibilities and open communication about the level of consent they are giving. Definitely, ma'am. आपने अभी बात की कि they should go to the police, they should go to help centers and get help. One of the concerns always is कि because they're doing it secretly, छुपा के काम कर रहे हैं, they don't want their families to know or they don't want the society to know. So confidentiality level क्या है maintain किया जाता है आपके experience में especially, not just in the law, कि क्या पाकिस्तानी institutions confidentiality protect कर पाती हैं? Honestly speaking, जो attitude है towards people who are dating वो बहुत बुरा है और जाहिर है सबसे पहला तो इल्जाम यही लगता है कि ये लोग तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और सब कुछ है तो आपकी जो एक respect जो आप deserve करते हैं वो तो वहीं पे नहीं मिलती from our police because they are not sensitized enough. जहाँ तक बात है confidentiality की, there is a recent act which safeguards the identity of the victim और उसमें आपने उसकी recent example देखी होगी, the motorway incident. Throughout the reporting, we never knew about the real identity of the victim or what was the name, where she lived, because उसके ऊपर वो कानून I think पहली दफा पाकिस्तान की history में apply किया गया. And everyone was very watchful, very mindful, including the police worked really hard कि कहीं से भी उसकी identity disclose ना हो क्योंकि वो चीज़ उसके ऊपर apply कर रही थी. So
उस चीज में पुलिस का एटीट्यूड उस केस में इट वाज रियली कमेंडेबल कि उन्होंने सारे एथिक्स को और सारे एसओपीज को फॉलो किया। सो कानून प्रोविजन देता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करें और जो उसकी आइडेंटिटी है वो शो ना हो और खातून को रिलीफ भी मिल जाए। पर ये बातें जब ड्यूरिंग जो आपकी प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, ये खातून को खुद भी पता होना चाहिए कि क्या क्या कवानीन हैं जिनके तहत मैं रिलीफ ले सकती हूँ, या ये मेरा राइट है, या ये आई शुड बी एबल टू मेंशन। बिल्कुल, मोटरवे इंसिडेंट का मुझे भी नहीं पता था कि उसमें एनोनिमिटी इतनी प्रोटेक्ट हुई है, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। मैम, बिकॉज हम डेटिंग की बात कर रहे हैं और अब्यूसिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस है ग्रूमिंग के नाम की। ग्रूमिंग इज एसेंशियली जब ओल्डर परपेट्रेटर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं यंगर वुमेन को या चिल्ड्रन को बाय गिविंग देम अफेक्शन, बाय शोइंग देम अ लॉट ऑफ लव, एंड देन बाद में उन्हें एक्सप्लॉइट करना बाय सेक्सुअल फेवर्स और फिजिकल फेवर्स एंड अदर थिंग्स। सो ग्रूमिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी अननोन है कि ये होती है। एंड रिसेंटली 2000 केस पे काफी ज्यादा इस बारे में बात की गई है, ग्रूमिंग हुई है उस बच्चे की। सो ग्रूमिंग के बारे में आप हमें क्या बता पाएंगी कि ग्रूमिंग का प्रोसेस क्या होता है, और ग्रूमिंग आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो somebody is trying to groom you or prevent your children from being groomed, because online तो spaces बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, दैट कम्स ऑन द पेरेंट्स एंड द टीचर्स एंड द एल्डर siblings and the cousins who have to constantly counsel the young generation, the emerging teenagers, और जो भी हमारे बच्चे इस vulnerable segment में who can fall a victim to all this. Even adults, उनको नहीं पता होता कि कोई हमारे साथ कैसे behave करे और कितनी उसमें कितना ये एक intentional एक planned चीज़ है, and where can we end up. So basically the first level of awareness that needs to be given to the parents, then the teachers, और जो लोग उससे गुजर चुके हैं और those who have experienced, I think वो भी अपने कुछ support groups बनाएं, and it's their responsibility to make people aware that this is the pattern which is, you know, this exists, it is very common, और इससे लोगों को नुकसान पहुंचता है और हमने किस तरह वो करना है। हर I think 6 months या साल के बाद ये बच्चों की जो growth हो रही होती है, the way the internet is working, the children, we undermine them a lot, they know maybe more than us. उनको ये बताना उनके सेफ्टी के रूल्स, इंटरनेट सेफ्टी क्या है या बिहेवियर सेफ्टी क्या है और कैसे ये करना है, आई थिंक ये इस पे बाकायदा स्कूल्स में और हमारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आप एक अवेयरनेस का काम कर रहे हो, इस पे बाकायदा सेशंस होने चाहिए, क्योंकि लोगों को इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि ये होता क्या है या ये कोई सेट पैटर्न है और हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ फ्रॉम इट। मैम, बिकॉज आपने इतनी दफा बात की है कंसेंट की, ओपन वर्बली कम्युनिकेट करने की अपनी बाउंड्रीज को, तो अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल महसूस होता है किसी को कहना कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद, या अगर आपने किसी एक सिचुएशन में हाँ की है तो लोग अज्यूम करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में भी यू आर रेडी टू डू द सेम स्टफ अगेन, बेशक वो छोटा सा कोई हो। जिस तरह आपने किसी को पैसे दिए तो लोग अज्यूम करते हैं दोबारा भी दे दे, इवन दैट सिचुएशन। सो कंसेंट को आप थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को गाइड कर सकें कि कंसेंट में इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप या आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं या कुछ इस तरह आपके कह दें कि this is unacceptable for me, it's good to be friends but I can't think of anything more like this, या इससे ज्यादा नहीं करना, या I don't want it right now, yeah, we have to be very clear. I think यहाँ पे ना लड़कियों के साथ वो attribute किया जाता है कि they are supposed to be shy and docile and all, or they are not supposed to be talking about it, but I think if you are moving independently and if you're studying in universities or colleges और आपके parents ने आपको वहाँ भेजा है, the parents also expect कि आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, और लड़कियों को भी इतनी अकल होनी चाहिए कि अगर हमने एक लेवल पे मूव करना है तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। और ये जो कंसेंट की बात है, this has to be told explicitly to an individual जिसके साथ आपके रिलेशनशिप है, in a group of friends, so that others are a witness also. Better to say it during texting also, so that you can keep a screenshot saved or something for your safety later on. Screenshots do help. उसका लोग तोड़ ये निकालते हैं कि they keep on talking on calls and they try to avoid something जिसकी आप screenshot ले सकें. So I think this is where girls need to be smart enough, or boys need to be smart enough also, कि क्या क्या चीजें हैं जो document हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हो सकती हैं. But I think कि ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. देयर शुड ऑलवेज बी एन एलिमेंट कि अगर आपको लगता है कि someone is crossing the boundary, या you can get into risk, या this can be damaging, I think you should put your foot down बगैर किसी लिहाज के,
बगैर ये बात सोचे कि कोई मुझे अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा या मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी. You have to be explicitly clear about it. Even if you are going through a peer pressure, okay, my group members are very modern or they are okay with it. So you have to be confident about your decisions, about your choices, and you should be explicitly saying them aloud. Even in friends, to a single person, in groups, even during presentations, if we are discussing a topic, this thing needs to be clearly told कि जब consent कहाँ तक होता है और consent के बाद जो चीजें होती हैं वो किस चीज के अंदर fall करती हैं. मैम मैरिज के का जो निकाह नाम है उसको कंसिडर किया जाता है परमानेंट कंसेंट. आपने निकाह नामा पे कबूला कह दिया तो आपने परमानेंटली कंसेंट दे दी किसी भी चीज की. सो how do you communicate consent after marriage and not seem like a bad wife or a bad husband? ये बहुत tricky topic और tricky question है. The thing is कि consider तो यही किया जाता है, लेकिन अब ये it depends के और ये constant एक वजह है dispute की भी. The cases I get in the crisis center, they are mostly related to this. क्योंकि the spouses are they have expectations from each other. वो expectations दूसरा पूरी नहीं होती. अगर husband ने if he wants a certain type of wife or a certain type of attitude, same with the wife, she wants a certain type of husband and a certain type of attitude pertaining to him. वो नहीं होता तो ये सब चीजें होती हैं. But I think समझदार पढ़े लिखे लोगों की तरह उसको communicate कर देना चाहिए और चीजों को resolve करना चाहिए. It's all about communication, respect, your bandwidth और यही कि अगर आपके इतने communication is the key. बहुत सी चीजें हम assume करते हैं, बहुत सी चीजें मियाँ बीवी भी assume करते हैं, partners भी assume करते हैं कि ये बात है तो इसका ये मतलब होगा. जो saying it out aloud and talking it out aloud या going for a therapy या putting a counselor in between, ये चीजें तो पाकिस्तान में I think 1% क्या 0.001% भी नहीं होती होंगी. But these things help if you want to save your marriage. बाकी consent जो है शादी के बाद it is not a very common concept. So there are many women who suffer and there are many women who complain about sexual abuse and different types of abuse, and they because the husband says that you can't say no to me and I have rights over you. तो ये एक बहुत बड़ा prevalent issue है and people don't have the concept कि consent भी कोई चीज होती है even after शादी. This needs to be worked. मैम हमारा लॉ मैरिटल रेप को एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है या अभी तक नहीं करता? अभी तक उसका नहीं करता. अगर उसमें ऐसी कोई चीज हो that the woman is injured या उसको कोई bodily hurt हुआ है और वो she wants to report it और फिर उसका medical legal exam होगा तो वो उस कैटेगरी में आ जाएगा जो abuse की होती है, physical abuse की होती है, physical violence की होती है. लेकिन अगर वो मियाँ बीवी है, निकाह valid है तो marital rape उस तरीके से cognizable offense नहीं है as per my information. अभी तक तो नहीं. आपने काफी दफा ना बात की है क्लियर कम्युनिकेशन की, तो उस पे थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको लाइक शेयर करना चाहूंगी कि मैं इस तरह की इंसान हूँ कि इफ समवन इज क्रॉसिंग माय बाउंड्रीज तो मैं आगे से क्लियरली कम्युनिकेट कर देती हूँ कि नो नहीं. But the problem is, people don't see that as no. They see that as an invitation to convince you to say yes. So, काफी दफा ऐसा हुआ है कि when you say no, they will ask again. Then you say no again. And then that will continue for about 100 times until you eventually say yes. And then they blame you for saying yes because you did say yes. So, this is something that I feel like clear communication में yes or no का difference समझना जरूरी है. If you force someone to say yes, that's not a yes. असाइनमेंट्स करवाना किसी से कि मेरी असाइनमेंट कर दो कर दो कर दो कर दो, वो भी एंड पे जब वो यस कहता है दैट्स नॉट कंसेंट. दैट यस इज नॉट ऑलवेज कंसेंट. सो दैट पेस्टरिंग इज एक्चुअली प्रीटी प्रिवेलेंट. दैट इज अ वे दे फाइंड अ लूप होल अगेंस्ट द यस. आप बहुत अच्छा करते हो कि एटलीस्ट यू नो कि यू हैव टू से नो व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं अभी तक वो इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते एंड दे आल्सो थिंक दैट इफ अ पर्सन इज सेइंग नो, स्पेशली इफ अ गर्ल इज सेइंग नो, तो मे बी वो नखरे कर रही है या शी नीड्स पेस्टरिंग या शी नीड्स मोर ऑफ कन्विंसिंग. और जब हम बहुत ज्यादा कहेंगे तो हम कन्विंस कर लेंगे. सो दे शुड नो इट्स नॉट अबाउट देयर पर्सुएशन, इट्स नॉट अबाउट देयर कन्विंसिंग पावर. The no which was said earlier in the first time because you clearly evaluated all the pros and cons and you took a decision, okay, no, this is not possible for you, that was actually a clear no.
अब उसके बाद जो सेकंड फेज है, पहले स्टेज पे तो आपने हिम्मत कर ली, जो सेकंड फेज है उसमें भी आपको ही हिम्मत करनी है. Don't bother if they are minding it. Don't bother if they are unhappy about it. Stay firm on your stance. Let them be angry. Let them sulk for a while. If they are your true friends, they'll get fine. If they're not, don't get used by people. Do what you want to do, what seems good, and then just move on. It's okay. Definitely. थोड़ा सा strong होना पड़ेगा. yes, politeness होनी पड़ेगी, थोड़ी सी blunt होना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. नहीं, politeness छोड़ना नहीं, be polite always. लेकिन एक इसको हम एक टर्म होती है broken record. Broken record ये होता है कि वो एक ही चीज पे फंस जाता है और वो बार बार ना वही रिपीट करता रहता है. तो अगर कोई आपको कह रहा है कि कर दूंगा, तुम जैसे नहीं मैं नहीं कर सकती, वो आपको प्यार से कहेगा, गुस्से से कहेगा, आपने इम्पोलाइट नहीं होना, लड़ना नहीं है, आपने ब्रोकन रिकॉर्ड बन जाना है कि सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल. तो वो ब्रोकन रिकॉर्ड ना कभी तो कोई रियलाइज करेगा कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल. सो डोंट बी एंग्री और अपने आप को उस तरह मत करो. स्टे पोलाइट, कीप योर काम, बट डोंट डू व्हाट यू डोंट वांट. द ब्रोकन रिकॉर्ड इज अ गुड ऑप्शन. Yeah, that is a very good analogy. मैम हम काफी सारी बातें कर रही हैं, उसमें often हम assume करें कि women are the victims because women are usually the victim in these things. तो audience में सबसे पहला सवाल हमेशा ये आता है कि but men are also the victims and men also suffer a lot, which is obviously very true. Men do suffer. Domestic violence happens to men as well, sexual violence too. So my question was, does our legal protection systems protect men from these types of abuses, sexual abuse and domestic abuse? Because the definition of जिस प्रोटेक्शन एक्ट की मैं बात कर रही हूँ 2016 का जो भी लाहौर में एप्लीकेबल होने वाला है, उसमें जो विक्टिम है, इट कैन बी अ वुमन, इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अ ट्रांस पर्सन. सो उसमें ये क्लियरली चीजें डिफाइंड है. इट्स नॉट लिमिटेड टू फीमेल विक्टिम. वो इतनी ब्रॉड कैटेगरी है कि उसमें जा सकती. बेसिकली इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. इट्स अबाउट जरूरी नहीं है कि जो हमारे जेंडर रोल्स हैं, ये जो हम कहते हैं औरतें विक्टिम, इट्स बिकॉज दे आर इन आवर सोसाइटी, दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन मेन, दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स टू लिव अप टू. तो यूजुअली अज्यूम किया जाता है कि women are the victims because they are not strong enough or empowered enough. But there are situations when the tables have turned and it's the other way around. So the law, it does cover men also and trans persons also. That is really good to know. But ma'am, rape की जो definition पाकिस्तान के law में codified है, वो अभी भी it's about women who get raped. The definition of rape itself does not really include men. So how does that जो new law है वो understand rape for men? Like, is it rape of men by men, or rape of men by women? I don't think those things are still discussed or codified. जो बात है rape of men by men या boys by men, वो तो कवर होता है लॉ में, वो तो क्लियरली डिफाइंड है और इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और वो सेक्सुअल अब्यूज में आता है, वो क्लियरली डिफाइंड है. जहां तक बात है ऑफ अ मैन बीइंग रेप्ड बाय अ वुमन, अभी तक चीजें डिफाइंड नहीं है उसके ऊपर. इन चीजों के ऊपर बहुत साल आपको सिविल सोसाइटी को, बाकी चीजों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है, आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, आपको पार्लियामेंट्री बात करनी पड़ती है. ये जितने भी लेजिस्लेशंस अभी हम देख रहे हैं, they have taken years to brew, they have taken years to solidify. बहुत सालों की मेहनत है इन सबके पीछे. तो उस जो भी चीजें हमें लगता है कि ये चीजें जो है इन पे अवेयरनेस होनी चाहिए, उनके ऊपर हमें एक अपनी अपनी कैपेसिटी में एंड विद यूनिटी विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस वी हैव टू वर्क ऑन इट. फिर कहीं जाके अब जितना जो स्टेटस हम खवातीन आजकल एंजॉय कर रहे हैं, हमारा कोटा है, वी हैव द वोटिंग राइट, वी कैन ड्राइव, वी हैव प्रो वुमेन लेजिस्लेशन, ये उन औरतों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने आज से 50 साल पहले सड़कों में डंडे खाए थे या जो गर्मी में जुलूस निकालती थी या जिन्होंने कुर्बानियां दी थी. ये स्टेटस हम ऐसे ही एंजॉय नहीं कर रहे, इसमें बहुत से लोगों की कुर्बानियां और मेहनत है. वो फिर चीजें मेहनत से चलती हैं एंड देन वी सी रिजल्ट्स. तो इसी तरह ये जो चीजें जो हमें फील हो रही हैं कि कंसेंट डिफाइंड नहीं है या मैरिटल रेप डिफाइंड नहीं है या रेप ऑफ मेन डिफाइंड नहीं है, इसके लिए पहले तो बहुत ज्यादा काम होने वाला है कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, किस तरह उसको पेनलाइज किया जाएगा. मे बी अभी ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ काम हो रहा हो एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. सो वी नीड टू सी कि व्हिच बॉडीज आर वर्किंग ऑन दिस, तो फिर बंदा आप उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं. Definitely, ma'am. ये कहते हैं we are standing on the shoulder of giants. हम खुद कुछ नहीं है, हमें बनाया है हमारे forefathers ने, foremothers ने. मैम, रेप को या सेक्सुअल असॉल्ट को यूजुअली देखा जाता है पेनिट्रेशन के पर्सपेक्टिव से कि unless your body is violated, you are not raped.
So इसीलिए women raping men is a concept जिसे अक्सर men भी accept नहीं कर पाते कि I was raped by a woman, because there was no physical penetration, because that's not biologically possible. So how would you like from your own knowledge and work or opinion define or explain how is it possible for a woman to rape a man? Is it even possible? देखिए, एनीथिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन, कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, कोई भी इस तरह की जो एडवांसेस हैं जिसमें जो पर्सन जो भी बंदा है या विक्टिम है उसकी मर्जी शामिल नहीं है, उसका उसका जहन नहीं मान रहा या उसने एक्सप्लिसिटली पहले अपना डिसअप्रूवल शो कर दिया हुआ है, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेप ऑफ मेन, ऑब्वियसली दे कैन बी गिवन मेडिसिन्स, और उनकी एक बॉडी स्पेस जो है वो तो वायलेट हो रही है. हर बंदे की एक फिजिकल आइडेंटिटी, फिजिकल प्राइवेसी, फिजिकल सैंक्टिटी होती है, उसको कोई भी वायलेट करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा, तो जाहिर है इट्स एन ऑफेंस. इट्स नॉट दैट कि इट्स अ मैन और उसके अंदर ही कांट गेट प्रेग्नेंट और ही कांट शो दैट ही वाज हार्म्ड इन बाय पेनिट्रेशन, तो वो नहीं हो सकता. अगर उसकी फिजिकल स्पेस वायलेट हो रही है और ही इज ऑफेंडेड अबाउट इट और उसका कंसेंट नहीं था, either he was forced for it, he was tied, or he was given some medicine or whatever, or maybe he was filmed or blackmailed, तो वो obviously it's a crime. It should be taken like that. Indeed, it really should be taken like that. मैम, हमारे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के कोड्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान ने, क्या ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के कोड्स किस तरह से विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या फिजिकल असॉल्ट को ट्रीट करते हैं, या what's so special about these codes, and do they take trans women, trans men and men into account of gender based violence as well? अच्छा, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोड्स बनी हुई है ना, वो काफी स्पेशलाइज्ड इन द सेंस हैं कि उसमें खवातीन जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल अब्यूज की, रेप की, उनकी प्राइवेसी, उनकी कंफर्ट और उनका कंसेंट वगैरह का ख्याल रखा जाता है. स्पेशल कोड्स हैं, आई हैव विजिटेड, और उनका स्टाफ भी बहुत सेंसिटाइज्ड है. अभी तक उन्होंने आई थिंक जो 3 कैटेगरीज बनाई है वायलेंस की, आई डोंट नो टू मच अबाउट इन डिटेल. जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जो कैटेगरी 3 जो मेजर क्राइम है रिलेटेड टू रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज, अभी तक वही डील हो रहा है. आई थिंक कि उसको इन्होंने एक्सपैंड करना चाहिए कि इसमें सिंपल ऑफेंस के डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी भी डाल देनी चाहिए, जो कैटेगरी 1 होगी या 2 होगी या उस तरह होगी. अभी तक वो कैटेगरी 3 यानी कि सेक्सुअल ऑफेंस और रेप को ही डील करना है. और यस, उसमें ये केसेस होते हैं, ये जो ट्रांस केसेस हैं, ट्रांस पर्सन्स के और बाकी, लेकिन अभी तक वो एक सेंसिटाइज तरीके से उन्हीं केसेस को डील कर रहे हैं जो हमारे बच्चियों के खिलाफ या बाकी जो रेप केसेस होते हैं और चाइल्ड मोलेस्टेशन और उस तरह उन चीजों के. तो द कोर्ट्स दे डू एग्जिस्ट एंड यस, दे आर the judges and the other people involved, they are fully trained and they are fully sensitized and they know how to do their duty. That is really good to know. But obviously, जैसा हमने बात की, space for improvement or discussion और आहिस्ता years लगते हैं to improve stuff. मैम, हम थोड़ा सा wrap up की तरफ चलेंगे. Resources की हम थोड़ा सा बात करेंगे कि for example अक्सर औकात people are like, many people have approached me many times कि हमें किसी women rights activist के साथ जोड़ दो, this is the crime that has happened to us. So instead of going directly to institutions, because उन्हें institutions का पता नहीं है जो available है, so आपके मुताबिक if gender based crime has occurred against you, कौन सी resources और institutions available हैं apart from just the police जिनके we can reach out, like helplines या इस तरह? अच्छा, let's start from the preventive measures और prevention. तो सबसे पहले तो women safety app जो है वो सबके phones में होनी चाहिए, लड़कों के भी, लड़कियों के भी, even family members के. women safety app जो है it enables you to define an area which is not well protected or it's shady, or you can report, and all the helplines are together, 15 1043 है. उसमें एक section pro women legislation का भी है जिसमें आप बता सकते हैं कि पढ़ सकते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन कि ये कवानीन है जो खवातीन को सपोर्ट करते हैं. और आई थिंक whenever the women or girls or anyone they're leaving the house, they should have enough balance in their phone to make an emergency call or some data to connect to the app and report a place. तो बिल्कुल भी ये सेफ्टी मेजर्स हैं कि आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो you should be able to make an emergency phone call or keep some data reserved for using the internet and all. इसके अलावा अगर सिर्फ एडवाइस लेनी हो डोमेस्टिक वायलेंस में या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के किसी भी केस में, तो पंजाब कमीशन की टोल फ्री हेल्पलाइन है, इट्स 1043.
So 1043 पे we can take advice, we can tell them the problem, they can tell you where to go, what to do, what are the options available. वो एक telephonic guidance जो है वो मिल सकती है. But I always tell girls and boys कि life threatening situation में, चाहे वो आपके घर के अंदर है, चाहे आपको लगता है कि पुलिस आ गई तो क़यामत आ जाएगी या हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने या पुलिस पता नहीं क्या करेगी, don't hesitate, don't let a situation flare up to an extent कि आपको खुदा ना खास्ता कोई जख्मी हो जाए या जान से जाए. Don't hesitate, call 15, उनके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आते हैं, डॉल्फिन आती है. अब वो इतने भी हालात नहीं रहे कि वो कहीं ये घरेलू मामला है वो सेंसिटाइज ना हो, एटलीस्ट जान तो बच जाएगी ना. बाकी के जो मेजर्स हैं वो तो बात की बात है, किस उस मसले को कैसे सॉल्व करना है. बट उस वक्त अगर आपने जिंदगी बचानी है अपनी, किसी नेबर की, किसी फ्रेंड की, don't hesitate to call 15. Let the police intervene, let lives get saved. उसके बाद बात आती है कि जी एक इशू था जो there is a cycle of violence. ठीक है, the cycle of violence it always continues. वो एक पीक पे जाता है, फिर एक हनीमून फेज आता है, फिर चीजें सेटल डाउन, फिर they start simmering and then it goes. The cycle always continues. वो साइकिल कंप्लीट होने में 1 महीना लगे, साल लगे, 5 साल लगे, बट जो पैटर्न ऑफ अब्यूज सेट हो जाता है वो साइकिल कंप्लीट होता है. सो व्हेन यू नो कि चीजें स्टार्ट हो गई हैं एंड ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिपीट, चाहे वो कभी भी हो, यू हैव टू सीक हेल्प. क्राइसिस सेंटर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, 12 शहरों में काम कर रहे हैं, लाहौर में भी है. इसके अलावा अगर पुलिस में है वहाँ पे रिपोर्ट करना है थाने में तो वो स्पेशल जेंडर डेस्क बने हुए हैं जो इन कंप्लेंट्स को लेते हैं. वहाँ खवातीन हैं जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं और वो उसको ले रही है. पुलिस की अपनी एक हेल्पलाइन भी है. बट फॉर थिंग्स टू सेटल डाउन थ्रू in a softer manner, through talks, through communication, through mediation, or without involving the police, I think crisis centers are a better option for women. They can get things settled down. They don't ask for your parents to come. If you're an adult, you can always come and complain and file your complaint, and they can, use their system to settle things down. So the options are there. They are legal advice लेनी है, उसके लिए हेल्पलाइन में फेडरल गवर्नमेंट की 1099 वो अवेलेबल है. 1043 मैंने आपको बताया, दैट इज फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन केसेस. एडवाइस लेनी है, बताना है, रिपोर्ट करना है. दे गिव यू कंप्लीट गाइडेंस कि कहाँ जाना है. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में 15 पे करना है, मेडिकल इमरजेंसी में डेफिनेटली 11 करना है. I keep on mentioning medical emergency too because I have seen women in Lahore in such an urban center who pass away because उनको time पे medical help नहीं मिलती, चाहे उनको forcefully घर पे बच्चे deliver करने पे मजबूर किया जा रहा है या जो भी हो रहा है. Women lose their lives just because they don't get the right medical treatment on time. It's a basic human right to life कि जो बंदा जख्मी है उसके आसपास के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उसको फर्स्ट एड पहुंचाएं, उसको सही जगह पर लेकर जाएं. ये उनके फराइज में शामिल है. Because we should always be mindful that rights and responsibilities they go hand in hand. Whenever we talk about rights, we have to be mindful of our responsibilities too. Responsibilities as a citizen, as a human. जो लोगों का हमारे ऊपर आते हैं, हमें उन चीजों के बारे में भी mindful होना चाहिए. मैम ये जो हेल्पलाइंस हैं ये पंजाब के अलावा सिंध, बलूचिस्तान, केपी की साइड पे किस तरह की क्या इस तरह की ऑल्टरनेटिव्स पंजाब की अवेलेबल है? मेरे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की है, बट आई कैन चेक व्हाट अदर हेल्पलाइंस आर अवेलेबल इन अदर प्रोविंसेस एंड आई कैन शेयर देम विद यू और आप कैन शेयर विद अस. थैंक यू सो मच मैम. मैम इन प्रोटेक्शन हेल्पलाइंस के अलावा शेल्टर होम्स जो हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं कि कौन से अवेलेबल हैं जिन्हें लोग रीच आउट कर सकते हैं? अच्छा, shelter homes for women who need shelter, there are different categories. अगर उनको they are going to a life threatening situation, जान का खतरा है, तो उसके लिए जो सबसे सेफ शेल्टर है वो पंजाब गवर्नमेंट के दारुल अमान है. पूरे पंजाब की हर डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर में भी है और वो इट्स अ सेफ प्लेस. यूजुअली वहाँ हम कोशिश करते हैं कि कोर्ट रेफरल से ही चला जाए केस. वो एक वेल प्रोटेक्टेड जगह है एंड यू कैन लिव देयर 3 months 6 months और जब तक मामला सेटल डाउन नहीं होता वो एक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आप एक शेल्टर में रह सकते हो.
अगर life threatening situation नहीं है, there are other shelters available which are private shelters या civil society के आप NGOs के shelters कह सकती हैं. They are also free of cost, पैसे किसी चीज पे नहीं लगते. You just need to कॉन्टेक्ट. 10 तक का शेल्टर है. 10 तक का शेल्टर उन लोगों को वो शेल्टर देता है जिनका कोई लीगल केस पेंडिंग है. इसके अलावा देयर इज एन एनजीओ बाली मेमोरियल ट्रस्ट. दे हैव अ क्राइसिस शेल्टर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. वहां पे भी देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू आर इन ट्रबल, यू नीड शेल्टर, यू कैन गो देयर. और देयर फोकस इज ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. ऐसी खवातीन जिनको जो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, जिनके पास कोई आमदन का जरिया नहीं है, कोई स्किल नहीं है, दे हैव चिल्ड्रन अलोंग, और इफ दे आर नॉट इवन मैरिड, तो वो उनका फोकस होता है उनकी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराना through TIFTA, through other organizations, digital literacy के, and they try to not only give them shelter in time of crisis, they aim to economically empower them. So इस तरह की जगह available हैं, और basically ये हमने एक network बनाया हुआ है referral का. So in Lahore, women, girls, they can definitely come to this crisis center. The address is 148 A Block in Muslim Town, and we have a Facebook page, and the pen location is there also. Or I can share the numbers, and you can share it with others. So I think these are the forums which are available. Thank you so much, ma'am. आपकी आज टाइम का इतनी सारी information का I'm sure जो भी ध्यान से सुनेगा उसको बहुत help मिलेगी. Thank you so much for your time, and we're running out of time right now. And have a very nice. Thank you.